I hope everyone can see my screen at least. So, guys, from your last concept session, you would have studied something called the bean of same type. Okay, so beans of same type. Okay, so what I mean to say, suppose, suppose you are registering two beans. Let's say two beans you are registering in the Spring IOC container, and both of them are of same type. So when I say same type, that means let's take an example. Let's say an interface of xyz is an interface. So both of the classes, there are two classes, let's say class A and B. Okay, class A and B. So both of these classes are implementing the interface xyz. Okay, so in that case, if you will register this xyz for the bean in the Spring IOC container, okay, then what will happen? There will be the duplicacy of the bean of the same type. Okay, I hope you understood this thing, because my practice problem is based upon this thing only. That's why I'm just revising the concept. Okay, that means the class type, basically the bean type will be what? It will be the same type, because since we are extending this xyz interface, that's why the type of the bean which will return by the spring container, spring IOC container, that will be of same type. Okay, that will be of same type. So to to remove such an ambiguity, Spring Boot provides one beautiful annotation, and that we call as a primary, at the rate primary. And there is one more annotation, we call it as a qualifier. Okay, so before I proceed explaining this primary and qualifier, is there any person who would like to tell me what is difference between primary and qualifier annotation, since you already have understood this thing in the concept session? So anyone is there who would like to tell me at least what is the basic difference? I hope everyone can see my screen and can hear me at least. Okay, so you are not replying anything, then it's fine. So let me explain you what is the difference between this primary and qualifier. So basically, let's say let's say you are giving this annotation at the rate primary to remove the ambiguity of the beans of the same type. Okay, to remove the ambiguity of registering the bean of same type, you are giving this annotation called at the rate primary. So what it does, so as the name itself suggests, at the rate primary, so primary means what? It will make, suppose two beans are there of the same type, so on whatever the class, on whatever the component you will give this particular annotation, that component will become what? That will be the primary component. That component will be the primary component. So when I say primary component, that means Spring will give more priority to that particular component. Spring will give more priority to that particular component. For example, let's say in your family, you are there and your brother is there, and let's suppose you have been given with some extra responsibility, let's say to take care of your siblings. Okay, to take care of your siblings, or you are just, let's suppose you are just having a specific responsibility which other of your siblings is not having. Okay, that responsibility can be anything. Okay, so in that case, if you will be giving the specific responsibility, so in that case, what will happen? Basically, your parents will give you more priority, isn't it? Because you are having the responsibility to do particular thing. In that case, every time your parents will come and they will ask you for the same thing, whether you have completed that one or not, or whatever. Okay, so in the same way, if you have marked any of your component with this particular annotation primary, Spring will give that particular component as a more priority. Okay, so in this way, we can remove the ambiguity of registering the bean of same type. Understood?
guys, please respond. It's not like a monologue. Yes. Did you? Yeah, yes, sir. Okay, at least say yes, no, whatever, but otherwise I'll feel like I'm speaking and nobody is hearing. Okay, so just think from my perspective also. Then we have a different annotation also that we say as a qualifier. So qualifier means qualifier means we give specific names to the specific name to each of the beans. So suppose two beans are there, दोनों बीन के हम क्या रखेंगे, कुछ नामकरण कर देंगे, सम नेम दे देंगे, ठीक है। अब जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे हम ये एनोटेशन देते हैं, उस पे ये हम एनोटेशन देंगे, और उस समय हम उसके क्या करेंगे, उसका उसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। बेसिकली वैल्यू विल कंटेन द नेम ऑफ दैट बीन। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि स्प्रिंग बोर्ड को पता लगेगा कि कौन से बीन को ये कॉल करना चाहता है, क्योंकि हम नाम जब दे देंगे बीन रजिस्ट्री के समय ही, तो उससे क्या होगा, पता लग जाएगा स्प्रिंग बोर्ड को कि कौन सा बीन ये यूजर हमसे मांग रहा है, ठीक है। So we have two of the ways. One is using the primary annotation, then we have the secondary way is like the qualifier. Okay, so qualify is mostly frequently getting used in your application, because since this provides us the flexibility to call any of the beans as per our choice, ठीक है। लेकिन प्राइमरी के केस में क्या होता है, आई कैन मार्क एनी वन ऑफ द क्लास एज ए प्राइमरी, आई कैनॉट हैव टू प्राइमरी कंपोनेंट इन माय एप्लीकेशन। ओके, आई कैन हैव जस्ट वन एज ए प्राइमरी। ओके, दो चीजें प्राइमरी तो नहीं हो सकती ना, दो लोग वीवीआईपी तो नहीं हो सकते ना एक फैमिली में, एक ही कोई वीवीआईपी होगा। तो इन द सेम वे, so let's go to today's practice session. Okay, so I hope everyone can see my screen. Okay, so this is the practice question for today, and this will cover the concept of primary and the qualifier annotation. Okay, so the question says create an API to update the salary of employees from the given categories. Okay, so होता क्या है, किसी भी कंपनी में जो हम इंक्रीमेंट देते हैं, कंपनी वाले जो भी इंक्रीमेंट देते हैं, so they give the increment based upon, I hope recording is going on. Yes. So that increment happens based upon the job level hierarchy basically. So the senior people gets more increment as compared to the junior people. So same is happening here also in this API. They are asking like there are three categories in the company: senior managers, managers, and junior managers. Okay. So you have to give the increment to each of these categories by the given amount. The given amount for the senior managers are 10,000, then for the managers it is 7,000, then for junior managers it is for 5,000 only. Okay, so you have to design an API, basically you have to create an API which will give this particular increment to the employees of the company XYZ, let's say. What how you have to do here in the notes section, it has been written use an interface which has method this update salary. So update salary will be a method which will be declared in the interface. Okay, and that will accept what, it will accept the list of employee, list of employee. Okay, so basically list of employees जाएगा as a parameter, और return क्या होगा, return the list of updated salaries, list of updated salary रिटर्न करेगा वो मेथड। ओके, जो भी सैलरी आप इंक्रीमेंट करोगे उसका वो लिस्ट के फॉर्मेट में वो इनके वो करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। now what it is saying, create separate classes for updating the salary of each categories of employees. Okay, so इन तीनों कैटेगरी जो अब जो एम्प्लॉइज है ना, सीनियर मैनेजर, मैनेजर और जूनियर मैनेजर, तीनों का अलग अलग क्लास बनाना है आपको। उस क्लास को क्या करना है, जो इंटरफेस आप लोग बनाए रहोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है बेसिकली उसको क्या करोगे, इस तीनों क्लास में जो ये तीनों मैनेजर्स के लिए बनाओगे आप, उसमें क्या करोगे, उसको ओवरराइड करोगे। और ओवरराइड करने का मतलब क्या करोगे, जो इंक्रीमेंट परसेंटेज है, जो अमाउंट है उतने परसेंटेज उसको इंक्रीमेंट दे दोगे। ओके, और जो लिस्ट ऑफ सैलरी आएगी उसको आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। so this is what you have to do. Then the endpoint also it has given, endpoint means the value of the get mapping, post mapping, and whatever you want to have. So this is the update API, so you will go for the post or patch. So since we have to update just the salary, so better you go for the patch request, patch mapping. Okay, so three endpoints you have to create, one for the update of senior manager, update for the junior manager, and update for the managers only. Okay, so start doing it. Mm, at least start from first of the APIs. First of the API is this, and this will be the endpoint.
Okay, and this will be the senior manager, which will have the 10,000 of increment. I'll share the link of this document. Okay, I'll share the link of this document to this chat, and I'll wait for 10 minutes for this problem. Okay, so take your time. It's not about me doing everything, it's about your practice session. That's why I am just thinking to give you a time to just do it. Okay, so guys, I'll give you the other 10 minutes. From 10:25, sorry, 8:25, we will start discussing this problem. But I want you guys to at least try. At least try. It's a very, very simple problem. The moment when I will start doing it, you will feel like, yeah, I could have done it. But right now, since you are not practicing, so it looks like difficult for you. Okay, so start doing it. Okay, basically the concept of primary annotation and other annotation, qualifier annotation, will come into picture here. That just to give you a hint. Okay, remaining things are the same, whatever we had done before for creating API, creating service, and all those things. Okay, so your time starts now. At least I want everyone. 4 people are there in the session. 3 people are there. Okay, at least 3 people should try it. Okay, so start doing it and let me know if you face any difficulty. I'm here only. So your time starts now. And don't sit idle, guys. It's for your practice session, so utilize this time. I don't know how much you do it for your own. I hope everyone is trying. So 5 minutes are already over. The next 5 minutes is there before you.
So utilize this time and try doing it. I'm just asking you to create one of the APIs, the first one you can create. Upgrade salary for the senior managers. 2 more minutes, guys. Okay, so time has been over now. So guys, just focus on the screen. Later you can try if you are doing. Okay, so before I start discussing the solution of that particular problem, let me ask you one thing. Okay, let me ask you one thing.
So basically from the server end, from the server side, you would have studied about the three of the layers. Three of the layers you would have studied, I guess, I hope. If not, then it's not good. Okay, the first layer we call as a controller layer. Controller layer, then we have service layer. Okay, don't go for my handwriting, just follow my words. Okay, then we have the third layer as a repository layer. Okay, so repository layer, anyway, I think we have not started yet. So far we had started with the controller and service layer only. So so let me ask you one question. What this service layer is used for? Why do we use service layer in any Java MVC application? Just a simple question. Like controller layer we use to just accept the request and forward the response to the client, right? Same way, why do we use service layer in the application? Because you should be knowing, if we are using this layer means why we are using it. Okay, so anyone, any guy or girl, सर्विस लेयर हम एप्लीकेशन में क्यों यूज करते हैं? काम क्या होता है? अंकित, डू यू नो? Establish services. No, sir. Then why didn't you ask to your concept teacher? He would have taught you these concepts, right? Didn't he tell you like why do we use this layer? It's not good, Ankit. Anyone else? Gurpreet, Ashish, Sakshi? So simply, guys, you guys are attending 2 hours of session, and now at the end of the day, if I am asking a simple question, you are not able to tell. Anyways, it's your problem, it's your career. So let me tell you. So service layer, basically, this is a layer in an application where we deal with the business logic, where we deal with the business logic, जहाँ पे हम business logic लिखते हैं. कंट्रोलर में हम लॉजिक नहीं लिखते हैं. कंट्रोलर में सिर्फ हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम सर्विस को भेज देते हैं प्रोसेस करने के लिए. जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी बिजनेस लॉजिक होगा, जो भी कोड लिखना होगा, वो हम सर्विस लेयर में लिखेंगे. जो प्रोसेसिंग कोड होगा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सर्विस लेयर में यूज करते हैं. सो बेसिकली सर्विस लेयर इज अ लेयर वेयर वी implement the business logic part of the code. Okay, and in repository layer, it's a layer which interact with my database. जो database के साथ interact करता है, जो db के साथ interact करता है, ठीक है, वो repository layer होता है. So in the coming session you will deal with this repository layer also, but for now we are having only controller and service layer. So service layer फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा layer है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर कहोगे कि हमको बताया नहीं गया, हमको तो आता ही नहीं है. ठीक है, so keep it in mind, service layer is used for the business logic, that's it. Okay, so business logic का मतलब क्या है? The in our problem we have to give the salary increment based upon this hierarchy, based upon these categories basically. ठीक है, अब एक ही मेथड बना के हम अलग अलग थोड़ी ना सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इन आवर एम्प्लॉय क्लास देयर इज नथिंग लाइक द डेजिग्नेशन, राइट? You remember before we had created one model class for the employee, and there we had just name, salary and email address, I guess. Okay, there was nothing like the position or something. So we cannot give the increment based upon the hierarchy for this particular requirement. Okay, so इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेट मेथड लिखना पड़ेगा. And here it is asking us to just create a single method, update salary, in an interface, and just implement that particular update salary method for other categories, for all the categories. ये वो कहने के लिए करने के लिए कह रहा है. ठीक है, now let's go to our id and do it do it. ठीक है, so I'll let me close everything. So here first of all, since in my as you already would have seen this greet app we had created during the starting of our practice session, so I'm using the same repository.
So before we were having controller model, okay, and the exception also we studied in the practice session. Now let me create one more package. One more package I'll create and I'll name it as a service. क्योंकि हम जो लॉजिक पार्ट है, ये जो सैलरी इंक्रीमेंट करने का ये जो लॉजिक पार्ट इसमें बोला हुआ है ना, ये हम क्या करेंगे, सर्विस लेयर में लिखेंगे. ठीक है, दैट्स द स्टैंडर्ड वी फॉलो इन द इंडस्ट्री. All the business logic should be in a service layer, and inside this package we'll create one, first we will create one interface and I'll name it as a let me name it as update salary or something. Let's name it like update only, update class. So basically it's not a class, it will be an interface. Okay, it will be an interface which will have this particular method. ये जो method कह रहा है ना, ये method उसमें होगा. इसी method को बाकी classes क्या करेंगे, implement करेंगे. Correct. So let me just copy it as it is. Employee class already we had created this model class. Let me show you once again. So model में already हमने employee class create किया था. Okay, ये employee create किया था. तो यहाँ पे देखो name, age, salary, work experience, ये सारे इसके में parameters थे. Okay, and already we had created this thing. So I'm not going to create it once again. I will use the same employee class, employee model basically. Okay, so this one the method I have created. Okay, now let me name a local variable here. I will name it as a employee list something. Okay, and the return type will be what? Return type, it is saying it will return the list of updated salaries. List of updated salaries. So if you will go inside the employee class, you will see the salary is of type integer. Okay, so I'll have to return the list of integers. List of integers. List of integers. List of integers. Okay, now the my method signature has been done. The only thing is like I need some class which will override this particular method. Before we start, एक और मेरे सवाल का जवाब दो. Here you can see, because one guy, I think someone was there, Abhishek or someone, he had confusion here, like somewhere we use this small int and here I am using capital int. So can anyone tell me what is this, why we are doing it like this, or what will happen if we will not use small int or something? What will happen? Anyone? छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए. जावा का पूरा सेशन खत्म हो गया, सारा सब कुछ खत्म सर हो ये गया, अभी रैपर बैठे हो. क्लास है सर. तो रैपर क्लास है तो क्यों रैपर क्लास है? व्हाई वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट एज अ रैपर क्लास एंड नॉट एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप? व्हाई? एनी रीजन? रैपर क्लास है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर. So basically if you will go to the definition of list, if you will go to the list, the interface, you will see basically it is of type what? It is of type generics. Okay, so basically generic type का list java में define किया गया है, और जो ये पैरामीटर जो ये टाइप एक्सेप्ट करता है दैट इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट टाइप ही लिस्ट में एक्सेप्ट करेगा. Okay, if you will go get small int is not a object, it's just a primitive data type. If I just make you refresh, so you would have studied the data types of different type. The first one was the primitive, then you would have studied the user defined data types. So the user defines are something called the wrapper classes. So under the user defined only this wrapper classes and everything comes. So जब small capital integer की बात करते हैं, basically ये क्या है, जावा में एक क्लास है. ये इंटीजर एक क्लास है जावा में, देखो फाइनल क्लास है. ठीक है, और जब स्मॉल आईएनटी की बात करोगे तो ये क्या है, एक डेटा टाइप है. इट्स जस्ट अ डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो जावा जो कि क्या है, व्हाट इज जावा? इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. So all the interfaces, all the classes of the collection framework accepts this wrapper class only. It cannot go with the primitive data type like array. You would have studied the array. Array में हम small int लिख के काम चलाते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको सब कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा बेसिकली इन जावा में. ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कैपिटल इंटीजर ले रहे हैं. सो इवन दो वन मोर थिंग जस्ट पे अटेंशन. एटलीस्ट तुम प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा कॉशियस रहा करो, थोड़ा सा ध्यान दिया करो. तो यहाँ पे अगर आई इंटीजर आई एन टी है, यहाँ पे देख रहे हो, अगर हमने कैपिटल इंटीजर भी लिखा हुआ है, मतलब रैपर क्लास भी अगर हम वो कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, फिर भी कोई कंपाइलेशन एरर नहीं दे रहा है, एंड इट विल बी हैंडल इंटरनली. हाउ इट इज हैंडल? देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग.
ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, घर जाके आज पढ़ना ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, ठीक है। आई एम गिविंग यू द नेम ऑटो बॉक्सिंग, जस्ट स्टडी दिस टर्म, ओके, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग। तो ये कैपिटल इंटीजर भी लिख रहे हो, रैपर क्लास भी अगर रिटर्न टाइप ले रहे हो, फिर भी ये चल रहा है, यहाँ पे रिटर्न टाइप स्मॉल इंटीजर है, स्मॉल INT है, ओके, फिर भी चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, बिकॉज ऑफ ऑटो बॉक्सिंग। तो इसको आप लोग पढ़ना क्या होता है ऑटो बॉक्सिंग, इट्स अ जावा कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ I have created this particular interface. Now I'll create the different classes, and the different classes will implement this particular interface. तो different classes क्या क्या होंगे हमारे पास, पहले देखो, यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, और यहाँ पे कह क्या रहा है, क्रिएट सेपरेट क्लासेस फॉर अपडेटिंग द सैलरी ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। जितने कैटेगरीज हम उतने क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। सीनियर मैनेजर का एक क्लास बनाएंगे, मैनेजर का एक क्लास बनाएंगे, और जूनियर मैनेजर का एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। So let's do it. So in the service package only, let me create one class. I'll name it as a senior manager salary, SAL, okay. Senior manager salary, IMPL I am giving for the implementation, okay. You can give other name also, not an issue. So I will just implement what, I will implement that interface whatever I have created, इसको मैं implement करूंगा. And the moment when I am implementing the interface, I'll have to override this particular word, that particular method, ठीक है, तो उसको implement करना पड़ेगा, ठीक है. So let's first just create it as a null, later we will implement it. First let's create the other classes also. Okay, so other classes, junior manager हो गया, senior manager हो गया, अब क्या चाहिए हमें, मैं junior manager का एक class बना लेता हूँ, junior manager salary, IMPL, ठीक है. This one will also implement what, update method, update class, that is not class, that is an interface, okay, and it will also override that particular method, update salary method, ठीक है. और एक और चाहिए हमें, सिर्फ मैनेजर जो है, सीनियर मैनेजर हो गए, जूनियर मैनेजर हो गए, नाउ वी वांट वन सेपरेट क्लास to give the update of the salary for the managers also, okay. So let's create one more class. I'll name it as a manager salary IMPL, okay. So we have done. Now go with the implementation of that particular interface, ठीक है. इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया हमने, वो मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है. एंड नाउ वी आर डन विद द बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द बिजनेस लॉजिक. अब इसमें लिखना क्या है. नाउ कम टू द प्रॉब्लम. I hope everyone can see my screen and I'm audible to everyone. Okay, just stop me then and there if you face any difficulty. So for the senior manager, we have to give increment by 10,000. तो पहले senior manager का हम update salary का logic लिखते हैं, ठीक है. सीनियर मैनेजर कहाँ गए, यहाँ पे हैं, ठीक है. अब हमें क्या करना है, जो भी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज आएगा, बेसिकली हियर द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज विल कम फॉर द सीनियर मैनेजर्स, एंड हियर वी हैव टू गिव व्हाट, हियर वी हैव टू गिव द इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 and return the list of updated salary, okay. Now let's do it. So I'll use the Java 8 concept, the lambda function, everything, because I feel it easy, and already we have discussed these things. So I am expecting everyone would be doing it using the Java 8 features only, and not using the for loop and all those small kids kind of thing. Okay, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो थोड़ा सा कुछ एडवांस चीजें भी सीखो. So employee list, I will just do what I will first, what should I do? If you will go to the employee, so here you will see salary is there, other parameters are there, but I just want the salary. जो भी सैलरी हमारे पास एम्प्लॉय की होगी उसमें 10,000 और ऐड करके हम रिटर्न कर देंगे, यही चाहिए हमको, ठीक है. दैट्स व्हाट इज आस्किंग. करंट सैलरी पे ही ना इंक्रीमेंट देंगे हम. अगर तुम्हारी सैलरी अभी 20,000 है तो उसमें 10,000 इंक्रीमेंट देने का मतलब क्या हुआ कि 20,000 प्लस 10,000. So first I need to iterate through this list of employees, and then pick out the salary part and just return the salary with the increment of 10,000. So that's what I will do. So in employee list dot, okay, dot, since I just want the salary and just increase it by the 10,000, so no need to using this for each and all. I'll use the map method, okay. So for using the map method, I have to convert it to stream. So stream में convert होने के बाद ही होगा map, क्योंकि map function works on what, it works on the stream APIs, okay. Now I will take each employee, एक employee को लूंगा,
और एम्प्लॉय पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट द एम्प्लॉय डॉट सैलरी, उसमें मैं क्या करूंगा 10,000 ऐड कर दूंगा। 10,000 में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। 10,000 ऐड करना, 10,000 ऐड करूंगा। ओके, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन विद दिस लाइन ऑफ कोड, all the salaries, all the employees will be iterated, it will be just picked one by one in each iteration। एक एक एम्प्लॉय आएगा इस पर्टिकुलर लिस्ट से, उसकी सैलरी गेट सैलरी मेथड से कॉल होगा, उसमें 10,000 क्या हो जाएगा उसका ऐड हो जाएगा। और बेसिकली दिस लिस्ट विल बी कन्वर्टेड टू द लिस्ट ऑफ इंटीजर, क्योंकि सैलरी का क्या है, सैलरी इंटीजर टाइप का है। तो बेसिकली होता क्या, मैप इज व्हाट, इट्स अ मैनिपुलेटर बेसिकली, जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो हम एम्प्लॉय के साथ क्या करते हैं, उसका सैलरी निकाल के उसमें 10,000 ऐड कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड वी वांट टू रिटर्न इट एज ए लिस्ट। ठीक है, रिटर्न इट एज ए लिस्ट ऑफ इंटीजर। ओके, आई विल नेम इट एज ए अपडेटेड सैलरी लिस्ट, तो मैं ये नाम दे देता हूँ। ओके, सो हियर इफ यू विल डू व्हाट इज सेइंग, it is basically saying you are expecting the list but here you are getting the stream। So since we have converted that list to the stream, we have to convert it back to the list। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, already I think you would be knowing collector dot dot collect collect to list। collector dot save. हाँ, तो ये हम यूज करेंगे। ठीक है, लेट मी मेक यू अ शॉर्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्ट्रीम को वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड। ठीक है, और इसी अपडेटेड सैलरी को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, दैट वाज आवर स्मॉल लॉजिक। कुछ इसमें था, कुछ भी नहीं था, देखो कितना स्मॉल लॉजिक है। ओके, एंड दिस लॉजिक हैज टू बी रिटन इन द सर्विस लेयर। ठीक है, हमने एक अपडेट का जो इंटरफेस बनाया था उसमें जो मेथड लिखा था उसी को हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। ओके, नाउ माय सीनियर मैनेजर सैलरी अपडेट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो टू द जूनियर मैनेजर। जूनियर मैनेजर में जाते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए क्या इंक्रीमेंट देना है हमको, 5,000 का इंक्रीमेंट देना है। ओके, 5,000 का इंक्रीज देना। सेम लॉजिक वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद मैप फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मैप फंक्शन यूज करने के बाद क्या करेंगे, सारे सारे ऑब्जेक्ट से उसकी सैलरी लेंगे, उसमें 10,000 इस बार 5,000 हमको ऐड करना है। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, तो लेट्स कन्वर्ट टू द बैक, कन्वर्ट इट बैक टू द लिस्ट आल्सो बिकॉज वी हैव टू रिटर्न अंडर द लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई विल रिटर्न इट डायरेक्टली, instead of assigning to a variable I will just return it directly। okay, that's it, that's completed। see how small the logic is, just one line of code। ठीक है, एक लाइन में देखो सारी चीजें हो गई। फॉर लूप लगाने बैठते हैं तो कई लाइन लिखना पड़ता है, इसीलिए जावा 8 बहुत ही बेनिफिशियल है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, so this has been done। now come to the managers। so now here also we have to do the same kind of thing but here we have to give an increment of 7,000। okay, 7,000 का इंक्रीमेंट देते हैं। so यहीं पे लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम। ओके, डॉट स्ट्रीम डॉट डॉट क्या करेंगे, अब मैप फंक्शन यूज करेंगे। मैप में से एक एक एम्प्लॉय को निकालेंगे, एक एक एम्प्लॉय को मैं निकाल रहा हूँ, उसकी सैलरी निकालूंगा एक एम्प्लॉय से। के बाद गेट सैलरी, उसमें क्या करूंगा 5,000 ऐड कर दूंगा। ओके, एंड देन कन्वर्ट इट बैक टू द लिस्ट, कन्वर्ट इट बैक टू द लिस्ट, सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। गॉट इट। अब क्या होता है, अब since how you will create, already we have written the business logic, now we are supposed to create this end points। इस end point को अगर आप कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सैलरी अपडेट हो जाएगी और जो अपडेटेड सैलरी है उसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट। so let's do the controller part now। before doing the controller part, okay, we will see later, first go to the controller part and here already we have this employee controller, so I'm just using the same controller, let's not create the other controller। okay, so ये हमने पहले ही क्लास में किया था, पहले के प्रैक्टिस सेशन में। so here I'm going to create one more controller। okay, so basically since it is going to return what list of the updated salary, that means the list of integers।
So in the controller also I will just have the same kind of return type. Okay, so I'm just I'll use the what response entity. Response entity मैं use कर रहा हूँ, ठीक है, and here it will be what list of integers. Okay, let me name something, update senior manager, क्योंकि हमको तीन अलग अलग एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, सीनियर मैनेजर के लिए, जूनियर मैनेजर के लिए और सिर्फ मैनेजर के लिए, ठीक है. सो वी वांट थ्री डिफरेंट कंट्रोलर्स, ठीक है, थ्री डिफरेंट कंट्रोलर्स. ओके, सो ओके फाइन, एम्प्लॉइज, ठीक है. अब हम क्या करेंगे बेसिकली, लेट्स दिस टाइम लेट्स पास द first of all we will hard code it, then we will pass from the postman also. पहले हम इसको hard code करके कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, simply we will make a patch request, okay, without the body, and then we will do the body part also. Okay, patch mapping की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, वैल्यू वही रखेंगे जो इसमें दिया हुआ है. इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, update salary of senior manager. Okay, so let me name it correctly same way. Okay, now here what I need to do, I need to, ये जो सीनियर मैनेजर जो रिटर्न कर रहा है, ये जो क्लास रिटर्न कर रहा है, इसको मुझे रिटर्न करना है यहाँ पे. ओके, so to achieve that part, to call this particular method of senior manager here in this particular class, how I can do it, just that you have to see. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें there is a one concept called the dependency injection. I hope already you would have studied. So I will try to inject the dependency of this particular class. Dependency का मतलब क्या होता है, whosoever don't know, it's like the object. Basically you are asking Spring framework to create an object for you, and then asking that object whenever you need. So सर्विस का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को बोला है स्प्रिंग को, अभी तक बोला नहीं है, अभी हम बोलेंगे, ठीक है. So let's ask it. So in the interface only you have to give an annotation called service. Since it is a service layer, so we go with the specific name. It's the same like component only. Even if you will write the component, it will work, but since we are defining different layers, so to be specific we go with this particular service annotation. और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोग घर से खुद से पढ़ना कि डिफरेंस क्या होता है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है कंपोनेंट और सर्विस में और रिपोजिटरी में, जस्ट a small bit of difference. Okay, but internally it works, the component will work instead of service also. Okay, so some research you have to do from your end also. So service annotation I have given. Now I need to do what, I need to inject that dependency, the senior manager dependency, in this particular class. Okay, so how will I do, I'll use the auto wiring and I'll do the field injection. Field injection मैं करूंगा, कोई constructor कोई setter injection नहीं करूंगा for a simplicity. Okay, so update, I'll make a class of update object variable for the local variable for this object update. Now with this update I'll call that particular method, ठीक है. तो response entity ये इसका return type है, तो I'll have to make the object of response entity only. So response entity dot, first of all let's have the okay as a return type. We are expecting like no error will come, that's why I'm returning okay. Later we will handle the exception also. ओके, अब बॉडी में क्या पास करना पड़ेगा, बॉडी में हमें पास करना पड़ेगा जो ये मेथड रिटर्न कर रहा है. ये मेथड सीनियर मैनेजर का जो सैलरी इंप्लीमेंटेशन है वो जो रिटर्न कर रहा है वो हमको बॉडी में पास करना है, ठीक है. सो विल पास विद दिस पर्टिकुलर बीन अपडेट सैलरी, और इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को पास करेंगे, और ये हमको रिटर्न कर देगा अपडेटेड सैलरी, द लिस्ट ऑफ अपडेटेड सैलरी. ओके, तो पहले हम पास कर देते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द हार्ड कोडेड वैल्यू, देन वी विल पास फ्रॉम द देयर आल्सो फ्रॉम द पोस्टमैन आल्सो. ओके, सो ऑलरेडी आई हैड क्रिएटेड सम ऑफ द हार्ड कोडेड एम्प्लॉइज. दो एम्प्लॉय मैंने क्रिएट किया था पहले वाले सेशन में, तो उसको ही मैं यूज कर लेता हूँ. ओके, जस्ट टू सेव द टाइम. ओके, so here only I will use, and this employee list I will pass as a parameter. Okay, so here I will pass it a parameter. ठीक है, that's it. It will go with this update salary. ठीक है, और इसको क्या करेगा, वो करेगा कॉल करेगा इस मेथड को, जो भी क्लास इसको ओवरराइड कर रहा है, और उसको वो उसका वो जो रिटर्न करेगा वो मेथड वो उसको रिटर्न कर देगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर क्लाइंट को रिटर्न कर देगा. लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है. Okay, before going to that garbadi, let's create the other endpoint only also, then only you will understand.
So for this time I'll create one more method means for this thing, for the other two APIs for junior managers and senior managers. ठीक है, उसके लिए मैं create करता हूँ. So I'll have to create one more method for the controller, response entity, and here I need to do what? Again I'll return the same kind of thing, list of integer, and I'll name it as a update junior manager. Okay, SAL salary. ओके यहाँ पे भी नाम थोड़ा दे देते हैं ताकि पता लगे क्या अपडेट कर रहा है मैनेजर, कोई तो नहीं अपडेट कर दे रहा है. ठीक है, नेम वी हैव गिवन. नाउ वी विल आई विल यूज द सेम पीस ऑफ कोड. सेम पीस ऑफ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम पीस ऑफ कोड यूज करूंगा. बस इसका एंड पॉइंट का नाम मैं चेंज कर दूंगा, पैच मैपिंग, एंड आई विल नेम इट एज ए दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट. ओके, दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट जूनियर मैनेजर के लिए मैं ये एंड पॉइंट यूज करूंगा. ओके, जूनियर मैनेजर के लिए ये एंड पॉइंट यूज करूंगा. सिमिलरली वन मोर कंट्रोलर वी विल नीड फॉर द मैनेजर्स. ओके, so let me quickly just copy the same method and just I will replace wherever required. Okay, so this time I will need the this particular endpoint update manager, whatever it is asking. Okay, update manager, and here update senior instead of junior manager I will name the method name as update manager. Okay, got it. Now अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो जो आप लोगों ने जो यहाँ पे बीन डिफाइन किया है, जो बीन इंजेक्ट कर रहे हो यहाँ से, ये क्या है? इट्स रिटर्निंग ऑफ सेम टाइप मींस दिस इज टाइप कॉल्ड अपडेट. तो जो भी आप बीन, चूंकि यू आर आस्किंग द स्प्रिंग बूट, द बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क टू क्रिएट द बीन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप, इस पर्टिकुलर टाइप का आप बीन कह रहे हो क्रिएट करने के लिए. तो जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके, जो भी क्लास इसकी इम्प्लीमेंट करेंगे उसका वो ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देगा, इजंट इट? इसका वो ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देगा. तो हियर यू कैन सी we have this particular class senior manager salary update, which is also updating update interface. Here also it is updating implementing the update interface. Here also it is implementing the update interface. अब होगा क्या? Now first let's run the application and see what is happening. पहले मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा, एरर दिखाऊंगा, then we will come to the solution of this. Okay, so it's started running. Okay, it's started running. So the guys, just stop me then and there whenever you feel difficulty in understanding. Okay, I am feeling like it's a monologue only. I am speaking, you guys are not speaking anything. Okay, so we got some error. So यहाँ पे आपको error क्या मिला? Just look into the error part basically first. So here what it is saying, field update in this particular controller, employee controller of required type update could not be found. पहले तो आपको ये error मिला. अब वो क्या कह रहा है? बिन क्या error क्या कह रहा है कि in this employee controller, okay, whatever bean you are trying to inject, that is not अवेलेबल ही नहीं है स्प्रिंग बूट के पास, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास. अब चूंकि ऑलरेडी वी हैव गिवन दिस एनोटेशन कॉल्ड सर्विस. ओके, सो व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए था? इंटरनली स्प्रिंग बूट को जो भी क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए था. व्हेन आई से ऑब्जेक्ट, so in this particular case senior manager employee केस, इसके समय इसको क्या रिटर्न करना चाहिए था? लेट्स कम टू कंट्रोलर. इसको क्या रिटर्न करना चाहिए था? इसको रिटर्न कुछ ऐसा करना चाहिए था. जब भी मैं ये लाइन लिखता हूँ इसको रिटर्न कुछ ऐसा करना चाहिए था, ये रिटर्न करना चाहिए था. ठीक है, ये तब होता, this had been then when only single class would be there, only single class had been there which were implementing my interface. ओके, ये ऐसा तब होता है जब केवल सिंगल क्लास होता जो मेरे इंटरफेस को अपडेट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है. बट हियर यू कैन सी देयर आर number of
classes. There are 3 different classes which is of type same type को रिटर्न कर रहा है अपडेट, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या कि बेसिकली स्प्रिंग बोट को वो बीन ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये होगा, पहली बात को क्या मिलेगा, बीन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ इंटरनली क्रिएट ही नहीं हो रहा है। इंटरनली क्रिएट ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग बोट बेचारा कंफ्यूज हो चुका है कि किसका बीन बनाऊं मैं, किसको रिटर्न, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं मैं, क्योंकि ये 3 लोग हैं, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइप को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। 3 लोग हैं, 3 डिफरेंट क्लासेस आर देयर, ओके। सो these 3 आर देयर, these 3 candidates are there, first 2 and this thing also, न्यू ऑफ दिस। इन तीनों में से किसका बना के देगा, इसके लिए वो स्प्रिंग बोट कंफ्यूज है। पहले तो इस एम्बिग्युइटी को हटाएंगे, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इन तीनों जो क्लासेस है ना, इन तीनों का भी बीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबको हम एडिट कंपोनेंट कर देते हैं, अदरवाइज यू जस्ट एनोटेट विद द सर्विस ओनली, बेटर, ओके। सो तीनों को हम सर्विस से एनोटेट कर देते हैं, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। तीनों को मैंने सर्विस से कर दिया। अब इससे मैं बाय गिविंग दिस एनोटेशन व्हाट आई मीन टू से, आई मीन टू से क्रिएट द बीन ऑफ ऑल दिस 3 क्लासेस, तीनों क्लासेस का बीन क्रिएट करो। अब स्प्रिंग बोट क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, तीनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट अपने आईओसी कंटेनर में क्रिएट कर देगा। तीनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब ये तीनों चीजें क्रिएट हो चुकी होंगी, ये तीनों क्या हो चुकी होंगी, क्रिएट हो चुकी होंगी, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड सी व्हाट विल हैपन नाउ, what other error we will get, okay। What other error we will get, okay। So now come here and see what is there, what is the other error. Now our previous error has gone, now we are getting other errors. What is the error, other error, field update in the greeting controller, okay, required a bean but 3 were found। अब देखो कितना मजा आ रहा है, कह रहा है कि बीन तो बना लिया लेकिन 3 अलग अलग बीन हमको मिले हैं, किसको इंजेक्ट करूं यहाँ पे। अब इससे बेचारा पहले मैं क्या परेशान था, उसको बीन ही नहीं मिल रहा था। जब हमने इसको सर्विस से एनोटेट कर दिया तो बीन तो मिल गया, उसको बीन तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे बात फंस रही है कि किसको मैं इंजेक्ट करूं यहाँ पे, क्योंकि 3 डिफरेंट कैंडिडेट्स आर, 3 डिफरेंट पीपल आर देयर हु इज रिफरेंसिंग टू द सेम टाइप मीन्स सेम इंटरफेस। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, हमसे मांग रहे हो, तो मैं किसको रिटर्न करूं, किसको रिटर्न करूं, अंडरस्टूड। ये बेचारा कंफ्यूज है। सो उसके लिए सिंस ऑलरेडी वी हैड डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, we have some annotations which will remove this ambiguity from the spring framework, okay। जिसको वो remove करेगा। what is those particular Prim- annotations। So primary first one, and yeah, so first one is primary। so यहाँ पे चूंकि 3 already types हैं bean के, already 3 beans are there for of the same type। so what we can do, we can make any one of them as a primary, any one of them primary मतलब we can ask spring boot to give priority to any one of them। so ये जो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ना, 1 2 3, इन तीनों में से मैं कहूंगा स्प्रिंग बोट को कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो जब भी हम स्प्रिंग बोट को बताएंगे कि किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है मार्केट में, तो स्प्रिंग बोट क्या करेगा, उसका ही ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा, उसकी ही डिपेंडेंसी आपके क्लास में क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, गेटिंग। सो लेट्स फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट एनोटेटिंग इट, दिस पर्टिकुलर क्लास सीनियर मैनेजर को मैं प्राइमरी बना रहा हूँ, सीनियर मैनेजर को मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सीनियर मैनेजर को मैं प्राइमरी बनाता हूँ। अब नाउ वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग दिस टाइम, वेदर एप्लीकेशन इज गेटिंग स्टार्टेड और नॉट। I am closing this interface because this is of no use now, okay। so first time we got the error, bean was not found only, bean was not created only। second time we got the error, bean was created but there were three different types basically, so these 3 were type। now I have given this preference to the senior manager salary implementation class as a primary। so the moment when I have updated this as a primary, so now you can see application has been started and I can hit my API, I can hit my API। अब मैं अपने API को हिट कर पाऊंगा और
उसको क्या कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा। नाउ लेट्स हिट एनी ऑफ द एपीआईज, किसी एक एपीआई को मैं हिट करूंगा और मैं दिखाता हूँ कि होगा क्या। सो आई एम जस्ट हिटिंग द फर्स्ट वन, सीनियर मैनेजर, लेट मी हिट, इसको मैं हिट करूंगा। सो लेट्स गो टू द पोस्टमैन, आई विल मेक इट एज अ पैच रिक्वेस्ट एंड हियर आई विल मेक इट एज अ अपडेट सैलरी। ठीक है, ये वाला था ना, अपडेट सैलरी नहीं था, कुछ और था, ये वाला था अपडेट सीनियर मैनेजर सैलरी। ठीक है, पैच रिक्वेस्ट, नाउ लेट मी हिट इट, लेट मी हिट इट। ओके, 3 बार मैंने एचटीटीपी लिख दिया है, सॉरी। Okay, so I am hitting it. So here you can see the salary, the list of salaries I am getting 30,000 plus 30,000. क्यों 30,000 plus 30,000 मिल रहा है? क्योंकि क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे सैलरी में पास कर रहा हूँ 20,000। Okay, so I am getting the plus increment, that is plus 10,000 for the senior managers. Okay, so 10,000 जो मैंने इंक्रीमेंट वाले फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो 10,000 मैं ऐड कर रहा हूँ। Okay, so that's why you are getting the 10,000 इंक्रीमेंट विद दिस 20,000। यहाँ पे 20,000 मैंने पास किया था, अगर मैं इसको 40,000 कर दूं तो इस बार मुझे क्या मिलेगा, 40,000 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई विल हैव टू रीस्टार्ट माय एप्लीकेशन टू शो दैट, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अभी मैंने क्या एंड पॉइंट हिट किया है, सीनियर मैनेजर का किया है। अब आ जाओ इस पे, अब जूनियर मैनेजर का मैं एंड पॉइंट हिट करता हूँ, अब देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। ठीक है, आई एम हिटिंग द डिफरेंट एपीआई बेसिकली। So this time also you see you are getting the same kind of same result आपको मिलता है, मतलब 10,000 ऐड करके मिल रहा है, मतलब वही चीज मिल रही है जो सीनियर मैनेजर के लिए हमने लिखा था कोड। सीनियर मैनेजर को हम 10,000 का इंक्रीमेंट दे रहे थे ना, तो वही इंक्रीमेंट इसको भी मिल रहा है, जूनियर मैनेजर को भी मिल रहा है। ठीक है, अब नीचे वाले को भी देख लेते हैं, सिर्फ जो मैनेजर्स हैं इनको देख लेते हैं। तो जब मैं इसका भी हिट करूंगा तो आई विल गेट व्हाट, I will get the same result, same result I am getting. But this is not something which we wanted, right? We wanted like if we are giving this particular endpoint, so हमको दूसरा increment मिले, 5,000 वाला increment मिले, senior manager का दें सिर्फ तब 10,000 का मिले। ठीक है, that's what we wanted, isn't it? So अगर आप लोग कोड पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे ये जो अपडेट मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, इस तीनों क्लासेस में लिखे गए हैं, तीनों क्लासेस में लिखे गए हैं। So what do you think which update method would have been called? Is it the senior manager update method or junior manager update method or managers update method? Which one and why? Senior manager. Why? Because of primary. Correct, good, at least you replied, thank you. So see, since during the injection of the bean, that is of type of the interface, your update type, we have made this particular senior employee as a senior manager as a primary। तो क्या होगा, ये इसी का बीन रिटर्न करेगा, ये इन दोनों को रिटर्न नहीं करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये इन दोनों को रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ इसको रिटर्न करेगा प्राइमरी एनोटेशन से। प्राइमरी एनोटेशन से क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा विथ प्राइमरी एनोटेशन। प्राइमरी एनोटेशन से सिर्फ ये वाला करेगा। तो जब ये वाला करेगा तो इसी का ना अपडेट मेथड रिटर्न होगा। तो इसके ऑब्जेक्ट रिटर्न, इसके अपडेट मेथड में हमने क्या लॉजिक लिखा है, 10,000 का इंक्रीमेंट देना, isn't it? So that's why every time you are getting what, 10,000 only, even if you are hitting the different endpoints. Okay, so but what we wanted, हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे कि जो डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, हम चाहते हैं कि जो अपडेट जूनियर मैनेजर वाला है वो जूनियर मैनेजर का अपना मेथड कॉल करे, ये वाला मेथड कॉल करे। जो सिर्फ मैनेजर्स हैं वो अपने मैनेजर वाला अपडेट मेथड कॉल करे, मतलब ये वाला मेथड कॉल करे जिससे 5,000 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। उसको कैसे हम करेंगे यहाँ पे, ओके, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड द बीन क्रिएशन बाय द स्प्रिंग। ओके, हमने प्राइमरी करके स्प्रिंग सीनियर मैनेजर को तो दे दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर मैनेजर्स, जूनियर मैनेजर्स एंड मैनेजर्स। ओके, सो फॉर दैट टू इंजेक्ट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीन, एनी पर्टिकुलर बीन, टाइप तो सबका सेम है, टाइप तो सबका अपडेट ही है। टू इंजेक्ट एनी पर्टिकुलर बीन वी कैन गिव नेम टू द बीन्स। हम इन बीन्स को ना, जो क्रिएट हो रहा है सर्विस में, इस पर्टिकुलर क्लास का जो बीन क्रिएट हो रहा है उसी में हम इसको कुछ नाम दे सकते हैं। सम नेम वी कैन गिव, like we have some names, right? Every human have some name, every object on this planet has some name।
Same way we are supposed to give name for each of our beans which are having the same type. जो भी same type के bean है उनको हम कुछ specific name दे सकते हैं और उस नाम से जब हम कॉल करेंगे उस नाम से जब अपनी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रोलर में तो वो पर्टिकुलर टाइप वो रिटर्न कर देगा. ओके उस पर्टिकुलर टाइप को वो रिटर्न कर देगा मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसका नाम आप बता रहे हो उसको वो रिटर्न करेगा. ठीक है उसके लिए हमारे पास क्या है उसके लिए हमारे पास क्या है दिस सर्विस इज देयर राइट in this during the bean creation only you can give some name in the inverted comma. Okay some name आप दे सकते हो. तो यहाँ पे मैं क्या नेम दे देता हूँ. Let me give you some name like let me give the same kind of name. Okay you can give any name that's not a problem but I'm just using the same class name. It's not like you have to give the same class name only. You can give any name. Okay so I'm giving this particular name. Similarly for manager also I'll give the name. I'll give the name. इससे क्या होगा जब ये बीन क्रिएट होगा तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी के साथ बीन क्रिएट होगा. उसका बेसिकली जो नाम होगा इस नाम से बीन को रेफरेंस किया गया होगा इंटरनली. स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इस नाम से वो रेफरेंस करेगा. अब हम क्या चाहते हैं वी वांटेड टू कॉल द अदर टू बीन्स like the bean which has been named junior manager and the bean which has named as a manager in this particular controller. प्राइमरी की हेल्प से तो मैंने ये कर दिया. अब मैं इसको कैसे इंजेक्ट करूं. ओके उसको कैसे करूं. ओके फॉर दैट again we will have to inject that particular bean which is nothing but the your interface of type जिसका इंटरफेस होगा. ओके उसको मुझे ऑटो वायर करना पड़ेगा नो डाउट. Okay this time I will use a different variable name. Let's say update jrmag mng. ठीक है यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ update sr update senior manager. Okay sr for senior mng for manager mngr let's say. Okay mngr. ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी हमने दे दिया है तो ये तो बाय डिफॉल्ट सीनियर मैनेजर को ले लेगा. नाम हम चाहे ना भी दें तो ले लेगा. बट व्हाट वी वांटेड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज शोइंग एरर हियर. कंपाइलेशन एरर क्यों दिखा रहा है. ओके कंपाइलेशन एरर बिकॉज ऑफ दैट. ओके फाइन. सो अभी हम चाहते हैं कि ये वाला जो जूनियर मैनेजर वाला क्रिएट हुआ है इसमें ये वाला ऑब्जेक्ट वहां पे रिटर्न हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस नाम को एज इट इज यूज करेंगे एंड देयर इज वन मोर एनोटेशन अपार्ट फ्रॉम ऑटो वायर एंड वी नेम इट एज ए क्वालिफायर यूज करेंगे और उसमें उसके नाम को हम क्या करेंगे प्रोवाइड कर देंगे जिसका हमको ऑब्जेक्ट चाहिए. तो वी वांटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस जूनियर मैनेजर. तो जो हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम दिया था इसको वो नाम से हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. ओके उस नाम से हम कॉल कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा. ये वाला न्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा. इट विल रिटर्न अस द दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके same way we have to return the object of this one only. We have to inject the dependency of this particular class also. Okay same way what happened to this. Okay so एक और हम bean inject करेंगे update and this time I'll name it as a update mngr update manager. ठीक है इसका मैं basically local name I am giving. Nothing complicated here to understand. Again you will have to inject it using the auto wire. Okay this time I'll use again the same qualify annotation to just ask for the bean of particular name. यहाँ पे मैंने name क्या दिया हुआ है manager salary implementation. Okay so let me use the same name. Same नाम मैंने use कर लिया. ठीक है now I have 3 different beans which will return of different types. Okay so ये क्या return करेगा आपको ये बेसिकली ये चीजें रिटर्न करेगा न्यू ऑफ मैनेजर सैलरी इम्प्लीमेंटेशन ये रिटर्न करेगा. ठीक है ये रिटर्न करेगा. सो इन दिस वे वी हैव अवॉइडेड दैट एम्बिग्विटी ऑफ लाइक व्हाट ऑफ बीन हैविंग द सेम टाइप. जो बीन सेम टाइप के थे उस एम्बिग्विटी को हमने हटा दिया. नाउ लेट्स कॉल यूज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स एंड वी विल कॉल आवर रिस्पेक्टिव मेथड्स इन आवर एंड पॉइंट. तो ये सीनियर मैनेजर का था
कहाँ गया सीनियर मैनेजर वाला अपडेट सीनियर मैनेजर। सो सीनियर मैनेजर के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अपडेट एसआर मैनेजर, उसके थ्रू कॉल करेंगे। जब इसको कॉल करेंगे तो हमारा हमेशा कौन सा मेथड कॉल होगा, जो सीनियर मैनेजर के लिए लिखा गया है, जो इसके लिए लिखा गया है वो वाला कॉल होगा। ठीक है, सेम वे वी हैव द अदर वन फॉर द जूनियर मैनेजर, अपडेट जूनियर मैनेजर इज देयर। ठीक है, उसके हेल्प से हम क्या कॉल करेंगे, जूनियर मैनेजर वाला कॉल करेंगे। अपडेट मैनेजर इज देयर, दिस इज फॉर अपडेट जूनियर मैनेजर। So let me just call it with this particular reference variable. Okay, now we have the other one, the last one, that is update manager. Okay, so now let's go here and just call it. So इस तरह से क्या होगा, जो भी रिस्पेक्टिव टाइप्स हैं, जो भी रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ सेम टाइप, ओके, वो वाले बीन रिटर्न होंगे आईओसी कंटेनर से। जो भी आपने नाम दिया है ना, उस नाम के जो बीन आपको यहाँ पे जो मिलेगा, नाम आप अगर अलग रखोगे तो फिर वो नहीं उठा पाएगा, इट वॉन्ट बी एबल टू कॉल दैट पर्टिकुलर बीन। यहाँ पे नाम आपने कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो इट वॉन्ट वर्क। सो यू हैव टू गिव द सेम नेम बेसिकली। सो this way we will try to remove the ambiguity. Now let's remove our first let's do what, let's use the different values here so that we can understand the difference. यहाँ पे 20,000 40,000 हमने सैलरी रखा है, here we will give some less salary, here we will give salary of let's say 15,000, okay, and here we will give the salary of let's say 25,000, and here we'll have the salary of for the manager, let's have the salary of 10,000 initially, and here we'll have the salary of 15,000. ठीक है, कुछ random number मैंने दिखा है. The only intention here was to make you difference between the different types of bean, not different type, bean of same type, okay, bean of same, multiple beans of same type, multiple beans हैं same type के, उसका मतलब सिखाना था यहाँ पे. ठीक है, so now let's start the application. Let's start the application first. Okay, so our application has been started. Let me clear the log. Okay, now we will hit one by one each APIs and we will see the difference. ठीक है, डिफरेंस क्या होना चाहिए कि जब भी जो सीनियर मैनेजर वाला अपडेट मेथड है, अपडेट सैलरी मेथड, वो जब कॉल होए इस एंड पॉइंट से, सो जो उसका इंक्रीमेंट है 10,000 का, वो हमको मिले. तो यहाँ पे क्या है, 20,000 है, 40,000 है, तो इंक्रीमेंट 10,000 का होगा सीनियर मैनेजर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 का 30,000 हो जाएगा, 40,000 का 50,000 हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो. ओके, Yes, sir. so I'm hitting that endpoint for the update senior manager. So here you can see I got 30,000 and 50,000. इनिशियली सैलरी कितनी थी, 20,000 और 40,000. सीनियर मैनेजर को जब हमने इंक्रीमेंट दिया तो कितना हो गया, 10,000 रुपए बढ़ गए, तो 30,000 और 50,000 हो गए. ओके, नाउ लेट्स गो टू द अदर एंड पॉइंट विच इज फॉर द जूनियर मैनेजर. तो जूनियर मैनेजर का जब हम हिट करेंगे तो जूनियर मैनेजर को हम कितना दे रहे हैं, हाइक कितना दे रहे हैं बेचारे को, 5,000 ही दे रहे हैं हाइक. ठीक है, तो 5,000 दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा और ये 30,000 हो जाएगा. सो इन द रिटर्न वी शुड हैव 20,000 and 30,000. नाउ लेट्स गो एंड हिट एंड सी. Okay, so here you can see we have got the update as 20,000 and 30,000. That means it is working properly. Now let's come to the last one, last API, that is the manager salary update. And how much we are giving to the managers, we are giving 5,000. 5,000 we are giving increment. To whom we gave 7, okay, sorry, my bad, I give 5,000 to both of them. I'll have to give 7,000 na, as per the problem. 7,000 देना है, सॉरी आई गेव इट रॉन्ग. सो यहाँ पे मुझे 7,000 करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल गिव, अदरवाइज बाय विद दिस पर्टिकुलर केस इट विल रिटर्न द सेम. इसके साथ ये सेम रिटर्न करेगा, ये भी जब मैं हिट करूंगा तो. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट करेक्ट द कोड and just rerun the application once again. Okay, so basically I was giving the wrong value, that's why it gave you the same value for the senior manager and manager also. Okay, so that's how we can handle the bean of different bean of same type. Okay, different bean of same type. Okay,
so I have started the application. Now let's go in the controller and see how much we should expect for the case of manager. तो यहाँ पे जो 10,000 है वो कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा, और जो 15,000 है वो कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा. यही है ना हमारे मैनेजर में 7,000 का इंक्रीमेंट देंगे तो ये बेसिकली कितना होना चाहिए, 17,000, ये होना चाहिए 15 7 22,000, 22,000. Okay, so let's run the application. So here you can see again we are getting 20,000 and 30,000. Why? Update junior manager. Okay, we won't have update junior, update manager salary. Okay, we are hitting different endpoint. Okay, so here you can see we got the 17,000 and 22,000. That's what we were expecting, isn't it? So here what we have learned how to handle the different beans of same type. So again I'm going to revise it, just be very careful. So when I say bean of same type, that means there will be one interface, and that interface would be getting implemented by different classes. तो यहाँ पे junior manager एक class था जो implement कर रहा था, manager एक class था जो implement कर रहा था, senior manager एक class था जो implement कर रहा था. ठीक है. So whenever you will try to inject the dependency of that particular type मतलब यहाँ पे जो type है हमारा update का type है. So in the controller we tried to inject that dependency. तो इस केस में क्या हुआ, जब भी हमने इंजेक्ट करने की कोशिश की, तो सिंस वी वर हैविंग द 3 डिफरेंट बीन्स क्रिएटेड फॉर द सेम टाइप, 3 डिफरेंट बीन्स क्रिएट हो गया था, दिस वन एंड दिस वन. सो स्प्रिंग को कंफ्यूजन हो गया कि विच वन टू इंजेक्ट, सिंस इट हैज द 3 different beans of same type, so which one to inject. So that's why to avoid this ambiguity we have given first annotation as a primary. तो प्राइमरी देने का क्या मतलब हो गया, जिस भी क्लास पे आप प्राइमरी एनोटेशन दोगे, फॉर वट एवर द कंपोनेंट यू विल गिव प्राइमरी एनोटेशन, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी गिवन एज अ मोर प्रायोरिटी इन द स्प्रिंग बूट, इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क. ओके, तो जिसको आप प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, बाय डिफॉल्ट that will be injected in your class wherever you will inject the dependency. Okay, but what if we want to inject the dependency of some particular type? ठीक है, सब हमेशा थोड़ी ना सबको प्राइमरी बना सकते हैं. So for that, to avoid that such ambiguity, we are supposed to give the value some name of the beans. So here we give this particular name, और इस name के साथ मैंने क्या किया है, कॉल किया है अपने कंट्रोलर में. So we have one annotation called qualifier. So qualifier will provide us the benefit of calling the bean of injecting the bean of some particular name. जो भी नेम से आप बीन बनाए रहोगे स्प्रिंग आईओसी में, उस पर्टिकुलर नेम से आप कॉल कर सकते हो. सो हियर यू कैन सी आई एम कॉलिंग विद दैट पर्टिकुलर नेम. These 2 names I gave in my respective classes. So here you can see I gave the for the manager I gave this particular name, for the junior manager I gave this particular name, और उसी नेम से मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ. So I am getting the response. I am getting the response. Okay. So any doubt, anyone, any guys or girls, किसी को कोई confusion? No, sir. Since we have only 5 people, so we can take the question. Okay, so Ankit has no confusions. What about other people? Okay, so I'm assuming no No, confusion. sir. ठीक है, चलो, well and good. So the next part would be since you have already studied the exception handling. So उसको भी थोड़ा सा हम करने की कोशिश करते हैं, since the other part of the problem is the handling this string this particular exception only. So actually में क्या होगा, एक्चुअली में ये जो डेटा है ना, ये डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में आएगी, एक क्लाइंट पोस्टमैन से हम पास करेंगे. ठीक है, that you can do. I think that will be homework. Try to pass this data from the postman. Add here one request body of type employee, and there you can just fetch the detail and pass it here. ठीक है, तो उसको आप कोशिश करना घर पे. ठीक है, अभी का जो इंटेंशन होगा, अभी का इंटेंशन ये है कि जो हम सैलरी अपडेट कर रहे हैं हियर, वट एवर द सैलरी वी आर अपडेटिंग इन ईच ऑफ द क्लासेस, basically in a real life situation whenever you will have the repository layer and all, so ये सारे डेटा हम डेटाबेस से फेच करेंगे, उसको अपडेट करेंगे. So what happens, there can be some exception during this process. So exception means कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मैंने क्वेरी गलत लिखी हो सकता है कि डेटाबेस के साइड कुछ इशू आ रहा हो, डेटाबेस मेरा डाउन हो गया हो, जिस पॉर्ट पे रन हो रहा हो वो पॉर्ट ही बंद हो गया हो, कुछ भी हो सकता है. Any kind of exception is any kind of exception would have occurred. So it is advised to handle those kind of exception in your code. उस तरह के exception को handle करना
चाहिए हमें अपने कोड में. ओके, सो इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम वी विल गेट द 200 ओके ओनली. वी विल गेट द एनी, वी कैन गेट द any kind of errors also, basically exceptions also. So उसी के लिए हमारे प्रॉब्लम में कह रहा है कि थ्रो एंड हैंडल द एक्सेप्शन if in case any error occur during the salary update. So ये जो हम लॉजिक लिखे हैं इसमें कोई अगर प्रोसेस में कोई एरर आता हो, okay, so we should throw some errors. Okay, and what is the error? It is saying this particular error, salary update failure exception. इस particular name का हमको error throw करना है. Okay, so already you would have studied what, you would have studied the try catch block. So basically ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे. इसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे and we will if some exception would occur here, we will try to catch that particular exception. And what is the type we are what is the kind of exception we are expecting here? We are expecting the exception of this particular type, salary update failure exception. So हम उसको कैच करेंगे यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे कैच करेंगे. ओके, उसको हम यहाँ पे कैच करेंगे और उसको, उसके स्टैक ट्रेस को हम प्रिंट कर देंगे, ex dot प्रिंट स्टैक. ओके, वो बाद में देखते हैं. पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमने सैलरी, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? इन द जावा देयर इज नो एनी एक्सेप्शन कॉल्ड द, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना सभी लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग लोगों को नहीं आता है, जान जाओ. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ जावा, देयर इज नथिंग एनी एक्सेप्शन कॉल्ड द सैलरी अपडेट फेलियर एक्सेप्शन. ओके, सैलरी अपडेट फेलियर एक्सेप्शन कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. सो as a developer, it is our duty to create the custom exceptions. एज ए डेवलपर हम क्या करते हैं, हम कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं ताकि हमको पता लग सके कि वो फ्रॉम विच क्लास, फ्रॉम विच पर्टिकुलर कोड दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज कमिंग. एक्चुअली हम जनरल एक्सेप्शन कभी थ्रो नहीं करते हैं अपने रियल एप्लीकेशन में, हमेशा वी थ्रो अ कस्टम एक्सेप्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू क्रिएट द कस्टम एक्सेप्शन. कस्टम एक्सेप्शन बनाते कैसे हैं? सो उसके लिए जो भी आप कस्टम एक्सेप्शन बनाना चाहते हो, जो भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको उस नाम से एक क्लास बनाना पड़ेगा. बहुत ही शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं मैं, तो इसको ध्यान से समझना. सो ऑलरेडी वी हैव दिस पैकेज. सो इन दिस पैकेज वी विल क्रिएट वन क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप, ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम, सैलरी अपडेट फेलियर एक्सेप्शन. ठीक है, इसको हम यहाँ पे जब करेंगे, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, तो अभी आप देखोगे वो एरर चला गया. ओके, एंड हियर वी विल डू व्हाट, हियर वी विल डू ex dot print stack. Okay, later we will do, but here बाकी के classes को. okay, so here since as you can see here, it is showing error. What error it is showing? Required type throwable, and it is not basically of type throwable. जावा को पता कैसे चलेगा कि एक एरर क्लास है? कैसे पता लगेगा कि एक एरर क्लास है? बेसिकली इट्स अ सिंपल क्लास, सिंपल जावा क्लास ओनली, राइट? दैट वी कैन नॉट डू इट हियर, वी कैन नॉट कैच दैट इज, बिकॉज दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन. ओके, उसके लिए जो भी आपने यूजर एक्सेप्शन बनाया है उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा विद द रन टाइम एक्सेप्शन. रन टाइम एक्सेप्शन से जब एक्सटेंड करोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम द सब क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर रन टाइम एक्सेप्शन. उसका एक सब क्लास बन जाएगा, इजंट इट? और यहाँ पे देखोगे अब वो चला गया है आपका जो एक्सेप्शन था, जो कंपाइलेशन एरर था. नाउ आई विल जस्ट प्रिंट द स्टैक ट्रेस. ओके, आई विल जस्ट प्रिंट इट. ओके, फाइन. ओके, सो ट्राई कर लिया हमने, कैच कर लिया. ओके, now what will be, why it is showing error? Okay, cannot file symbol updated salary list. Okay, fine. So since it is a local variable here, it is not able to recognize it from there. So either we can just return it here only, we can return it here only. Otherwise I can make it a global variable. So better create a global variable, because here also it will expect you to return it. ठीक है, तो इसको मैं ग्लोबल बना लेता हूँ, बाहर ही डिक्लेयर कर देता हूँ. ठीक है, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. ठीक है, न्यू एरे लिस्ट जब मैं बना लूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ. एंड नाउ आई विल हैव टू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम दिस हियर. I'll just do it what, I will return the that particular object list basically. Okay, so in this way I am done. अब यहाँ पे, अब ये तो मैंने कर दिया. यहाँ पे मैंने कोई एक्सेप्शन आएगा तो उस पर्टिकुलर नाम से मैं उसको कैच कर लूंगा, इस पर्टिकुलर टाइप से, और बाकी की फॉर्मेलिटी मैं कर लूंगा. But here you can see I am just extending this particular runtime exception. But how to do it means how we can pass the message.
कुछ एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, कुछ मैसेज भी तो हम पास करना चाहेंगे, उसको कैसे हैंडल करें, उस मैसेज को हम कैसे एक्सेप्शन को पास करेंगे बेसिकली। ओके, उसके लिए बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस कंस्ट्रक्टर। सो इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा उसको। यू विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कस्टम एक्सेप्शन। ओके, कस्टम एक्सेप्शन का आपने कंस्ट्रक्टर बनाया। ओके, एंड इन दिस कंस्ट्रक्टर यू विल एक्सपेक्ट दैट मैसेज, वो एक्सपेक्ट मैसेज का करो जो भी आप मैसेज पास करना चाहते हो एक्सेप्शन को। ओके, और उस मैसेज को रन टाइम एक्सेप्शन के पास ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी मैसेज के लिए क्लासेस बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। यहाँ पे देखो रन टाइम में जब पास करोगे मैसेज तो वो पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट हो जाता है, यू वुड हैव सीन आई गेस। तो अब वही चीज, वो जो मैसेज, जो कस्टम एक्सेप्शन जो मैसेज पाएगा, इसी मैसेज को हम रन टाइम एक्सेप्शन को भेज देंगे। तो उसके लिए क्या होता है, सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड में क्या करेंगे, उसी मैसेज को हम भेज देंगे। ओके, सो वट एवर एक्सेप्शन दिस कस्टम एक्सेप्शन क्लास विल गेट, it will forward it to the runtime exception and that particular message would be shown on the browser, on the client side basically, wherever you want to show. Okay, so this is what we wanted to handle. Okay, अब क्या होगा, now this thing is over. Okay, try doing one more thing. So if any exception will occur here, we will catch it. Now try doing one more thing, since it is asking to handle this exception globally हमको इसको handle करना चाहिए, because see this exception is will occur from this particular method, so we can just do what, we can just uh, uh, do this particular, throw this, catch this particular exception and just handle it like this way. But what if we have several different methods? So here you can see I have one more method, so हर जगह थोड़ी ना जा के लिख सकते हैं हम, ठीक है, हर जगह ये ट्राई कैच थोड़ी ना लिखना सही है। उस केस में we have, since already you would be knowing this global exception handler we had created in the last session, last practice session, okay, where we just annotated it with the rest controller advice. Okay, so इसी क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एनोटेशन को, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। सो कैसे करेंगे, we'll have to create one method, and this method will also return the same map object, क्योंकि हम बेसिकली हम चाहते क्या है कि जो भी हमारा मैसेज, जो भी आप स्टैंडर्ड अगर देखा होगा आप लोगों ने एरर मैसेज का, तो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है, कुछ ऐसा होता है, लेट मी शो यू, हमेशा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है। सो इट्स बेटर टू शो इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसमें क्या होता है, मैसेज होता है कुछ, उसका स्टेटस होता है, क्या स्टेटस था एरर का। ओके, तो जो डिफॉल्ट जावा प्रोवाइड करता है एरर ऑब्जेक्ट, वो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, उसमें कुछ मैसेज होता है। Okay, you can add other properties also, whatever you want. So basically right now I'm just making it for these two things only, status and message, key or field basically. Okay, so ऐसे हम बनाना चाहते हैं, उसी के लिए मैं map use कर रहा हूँ, because of that thing only I'm using the map. So it will have a type of key as a string type and value also as string type. Okay, so I'll name it this method something like handle salary update failure exception. Okay, इसको ये handle करेगा और इसमें ये क्या expect करेगा, इसमें ये वो वही expect करेगा, ये वाला पर्टिकुलर एरर एक्सपेक्ट करेगा, पर्टिकुलर एक्सेप्शन एक्सपेक्ट करेगा एज ए पैरामीटर। ओके, सैलरी अपडेट आई विल नेम इट एज ए exp exception. Okay, now I'll use the same, whatever code you have written, right, same code will be applied here also, it will be the same code, nothing else, the same code आप हमेशा यही यूज करोगे, ठीक है, until unless you are going to use the different what, different properties, until and unless you want to send some different properties you will use the same kind of code. Okay, same kind of code आप use करोगे। Okay, but यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व मेथड, इसमें गेट बाइंड सैलरी नाम का कुछ है ही नहीं है हमारे पास। ओके, क्यों नहीं है, why we don't have, because we have not created any particular method here। तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है, जब आप इसको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये गेट बाइंड रिजल्ट कैन नॉट रिजॉल्व कह रहा है। सो उस केस के लिए फॉर नाउ let me do one thing. Okay, let me create this method here. Okay, so because see, if you will go to this particular get binding results here, if you will go to this particular binding results here, you will get the binding results, all the binding results. Okay, if you will go under the binding results you will find this particular errors, get all the error। इसमें क्या होता है, list of error object। Okay, so to avoid this thing एक काम क्या करते हैं कि
Okay, okay. For now, for the easiness part, let me do one thing. Get all errors. I'll have don't want to create everything from now. Okay, let me remove everything. Okay, let me let me just in this map only. Let me put basically I whatever things I am writing here in the map, everything should be here in the exception class. Whatever we have created, right? Let me close this thing. ये सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए. Okay, so don't go in that complexity as of now, because so many codes you will have to write, all the method, get binding, result, failure, result, everything you will have to write. For now, for the simplicity, I'll just return some message in the form of key and value. Status I will return as a for bad request or something. I can return as a 40403, okay, or 405 I'll return. Okay, now error dot put. Okay, message I'll put. मैसेज में क्या पुट कर दूंगा कि मैसेज में पुट कर दूंगा कि सैलरी कुड नॉट बी अपडेटेड. सैलरी कुड नॉट बी अपडेटेड. सैलरी कुड नॉट बी अपडेटेड. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर मेथड को क्या करना पड़ेगा, इसको एनोटेट करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था ना. कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो मेथड है कौन से एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. उसके लिए वी हैव द एनोटेशन एक्सेप्शन हैंडलर. ठीक है. उस एक्सेप्शन हैंडलर में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा. देन ओनली SpringBoot will know this particular type of annotation, this particular type of exception we are handling here. ठीक है. Similarly, status code भी आप यहाँ पे भेज सकते हो. Otherwise, already we are sending in the message, so we can send one more time. Otherwise, you can just skip also. Okay, so better you send some status code for the HTTP also. So basically ये तो मैसेज में जाएगा, बॉडी में जाएगा, लेकिन HTTP के पास जो HTTP का जो स्टेटस होगा वो भी भेजना जरूरी है. HTTP का मतलब ये here you are getting 200, right? So that also you have to send it to the servlet also, servlet status basically. Okay, so here let me send you HTTP status dot. Basically I will send something like status. Okay, HTTP status dot. Why it's not suggesting anything? One second, let me reuse first. Okay, so these things you will have to instead of bad request, and let me send some other HTTP status this time. Okay, so many are there. Conflicts created, failed dependency, expected exception, failed. Okay, so I am just returning this thing. Okay, so इस पे आप जाओगे तो कौन सा status code return करता है? It is returning 417. So let me send the same exception here also in the body also. Body में भी 417 ही भेज देते हैं. ठीक है. So this way you can handle the exception globally. क्या globally मतलब ये कोई भी जो classes है ना, कोई भी classes जो भी वो इस जो भी classes हैं उस particular type के exception को अगर वो throw करेंगे तो ये globally handle हो जाएगा. And I need not to write it here. I need not to write it here. यहाँ पे लिखने से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं. Okay, so this was an example of handling the exception locally using the try catch block, using the globally. Okay, globally I can have a separate class which will be annotated with this particular annotation. Okay, or uska respective handler method and just pass the message whatever you want to send it. Okay, so उस तरह से हम चीजों को handle कर सकते हैं. So for senior employees I have handled it locally. For the other employees like the junior managers and managers I am handling it the globally. So यहाँ से कोई भी exception जाएगा तो ये वाला method इसको handle कर लेगा. Catch block लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, so I hope you would have understand. Since we are hard coding it, so I cannot demonstrate you right now. Every time आपको success message ही मिलेगा, मुझे कुछ code में break करना पड़ेगा तभी आपको वो particular error मिलेगा. But the basic idea was to demonstrate you the local exception handling and the global exception handling. Locally के लिए again I am saying use a try catch block. For the global handling just create your own custom exception and just accept it as a parameter with this exception handler annotation and it will be done. Okay, so that's about the global exception handling. Okay, so यहाँ पे हमने जो problem था हमारे पास वो भी हमने कर लिया, global exception handling भी कर लिया. For your homework I'll suggest do this thing.
इन द कंट्रोलर वी आर जस्ट हार्ड कोडिंग एवरीथिंग, इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी है वो करो, रिक्वेस्ट बॉडी, सॉरी नॉट रिस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी वो एक्सपेक्ट करो, ठीक है। एंड द टाइप विल बी दिस थिंग ओनली, एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। इसको एक्सपेक्ट करो, ये बेसिकली कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, पोस्टमैन से आएगा, क्लाइंट देगा और इसको आप पास करोगे इसमें, ठीक है। So that's your homework. Now only thing is already I have coded, code is done, nothing complicated. From the postman you have to pass the body here. So the body आपको यहाँ से भेजनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी सैलरी वैल्यू आप भेजना चाहते हो यहाँ से वो आप यहाँ से भेजोगे, ओके। एंड यू कैन just see the difference, ठीक है। So that will be your homework. Now I see one more topic had been covered from the concept sessions, and that is your DB, introduction to the DB part, ठीक है। in the DB part I see the topics like प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक की, ओके। सो प्राइमरी फॉरेन की ये सब चीजें हम वो कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देन विल हैव द बेसिकली these are theoretical concept, nothing complicated here. So let me discuss it once again, okay. So basically so whosoever is not from the like whosoever has not seen the database and the SQL queries and all, this will be new thing for them. But before going to that part, let me tell you one thing, and that is in the oops concept you would have studied something called the association आपने पढ़ा होगा। कोई मुझे बता सकता है एसोसिएशन कितने तरह के होते हैं? एसोसिएशन मीन्स रिलेशनशिप, बेसिकली दो एंटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। तो एसोसिएशन दो तरह के होते हैं, कोई मुझे बताएगा वो दो तरह कौन कौन से हैं? व्हाट आर दोस टू टाइप्स? What are the two different relationship, man? Okay, so the two different associations are, first one is a relationship, then we have a has a relationship, so is a and has a, ठीक है। is a का कोई एग्जांपल मुझे बताएगा? Student and teacher. What student and teacher? Student is a teacher. No, sir. The class A extend to class B. So basically you would have studied this concept called inheritance ना? So inheritance में जो आप यूज करते हो वो is a relationship होता है। Yes, sir. समझ में आया? और has a relationship क्या होता है? For example, vehicle is a word, car is a vehicle. कार इज ए व्हीकल। कार एक तरह का व्हीकल ही होता है ना। अगर आप इनहेरिटेंस बनाओ, एक कार बेस क्लास ले, सॉरी व्हीकल बेस क्लास ले लो, कार उसका सब क्लास ले लो, उसको एक्सटेंड करो, so that is a class, is a relationship, okay. Now for our purpose, this inheritance and already you would have studied. For our purpose in the SpringBoot you will study this has a relationship, where you will deal with the different tables, different entities, okay. For example अगर suppose करो, right now I have just taken the simple model classes, but suppose let me remove it first. So suppose there is employee entity, employee नाम का एक entity है, ठीक है। employee के पास क्या हो सकते हैं? one employee can have multiple projects हो सकते हैं, या फिर सिंगल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। assume as of now there is only a single project, so here comes the role of has a relationship मतलब employee has a project. Similarly employee has a let's say a different entity has a address, okay. So what I mean to say, let's come to the coding part and show you something new to you, okay. ये जो हमारा एम्प्लॉय क्लास है, कहाँ गया मेरा एम्प्लॉय मॉडल, ओके। ये जो एम्प्लॉय क्लास है,
since these are the three different attributes, I can have a separate entity, a different entity as one of its relationship. I can make one of its relationship with one more property. Okay, one more entity. So let me make it like private address, address, and address. Okay, so I want this particular address as a relation for the employee, क्योंकि हर employee के पास क्या होगा, एड्रेस तो होगा ही ना. अब मैं चाहता हूं कि विद इन दिस entity I want to make this as a separate entity, separate class मैं इसको बनाना चाहता हूं. For your understanding I'm telling you. So what I'll have to do, I'll need to create an address class. ठीक है, वो एड्रेस क्लास बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, वो एज ए डिपेंडेंसी, एज ए नॉट डिपेंडेंसी, एज ए डिफरेंट इंटाइटी. तो ये क्या है, एक डिफरेंट इंटाइटी है, अ डिफरेंट इंटाइटी. So here comes the role of has a relationship. So has a relationship मतलब एक एम्प्लॉय है, उसका रिलेशन किसके साथ है, एड्रेस के साथ है. सो एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस. अब इस एड्रेस में क्या होगा, why we want to make a separate entity, that should be a question for you. Okay, so why it's a separate entity, because an address can consist of different properties. So address में क्या क्या हो सकता है, let's say it can have the string house number. कई सारे कंपोनेंट होते हैं ना एड्रेस में, एक ही कंपोनेंट थोड़ी होता है. देन इट विल हैव द पिन कोड, ओके, लॉन्ग पिन कोड और जिप कोड लेट्स से. ओके, it can have the other fields also, let's say city of type string. Okay, city. Okay, so one particular entity can have three different properties, and that's why I'm making it as a different entity altogether. ठीक है, तो अब इस एड्रेस के अंदर जाएगा तो ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं. अंडरस्टूड. सो हियर कम्स द रोल ऑफ हैज अ रिलेशनशिप. ओके, हैज अ रिलेशनशिप, RELATION. ठीक है, हैज अ रिलेशनशिप. तो बेसिकली again I'm repeating, employee has a address and that is a different entity. So what I meant to say, has a relationship is a type of association which is used in the in the db in the db design. जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल we figure out how many tables we want, how many different tables we want. Okay, so in this particular case, if I want to design one table, one database for the employee system, let's say, where I need to store the different details of the employees. So first table हमको जो चाहिए, first table चाहिए table 1. Okay, जो table 1 चाहिए, I want one table which will do what, which will store the basic employee details. Basic employee details में क्या क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगे, नेम, एज, सैलरी, वर्क एक्सपीरियंस. नाउ आई विल नीड अ सेपरेट टेबल. Okay, I need a separate table where I will do what, where I will store the address of the employee. Okay, to store the each employee address. हर एक एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमको एक सेकंड टेबल चाहिए. दैट्स हाउ वी आर डिजाइनिंग इट फॉर आवर एप्लीकेशन. ओके, you can design in the other way also. In the same table you can have that all these three values, but that will not make sense since it doesn't looks good, because every time if you are having the same different properties of same type, then it's better to create a separate table itself. उसको स्टोर करना आसान हो जाता है. ठीक है, that's why we are creating a second table. So this again I'm repeating, employee has an address. Okay, so this is basically has a relationship, and there is one more thing with this association, with this has a relationship, that we will see what is that. So has a relationship, दो और चीजें होती है has a relationship में. Okay, so has a relation में क्या होता है, has a relationship में क्या होता है. Okay,
So has a relationship is of two types. Okay, कोई मुझे बताएगा क्या क्या होते हैं? बताओ भाई. एक होता है कंपोजिशन. कंपोजिशन. दूसरा क्या होता है? एसोसिएट. एग्रीगेशन. एग्रीगेशन. Okay, already these things you would have studied, I believe. Okay, so एक होता है एसोसिएशन, एक होता है कंपोजिशन. कंपोजिशन और एग्रीगेशन. कंपोजिशन और एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? इफ आई आस्क यू द लिटरल मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, बिकॉज़ these things are going to be used in the relationship of the DBs, the different tables basically. So aggregation का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? That things you should understand first. So aggregation का मतलब क्या होता है? As the name itself suggests, okay, it's a self explanatory term. एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को कंबाइन करना. दो चीजों को, if you have one thing and one different thing, so you are basically doing what? You are just combining the two different things, and that we call as an aggregation. एग्रीगेशन का मतलब यही होता है, दो चीजों को मिला देना. एग्रीगेशन सॉल्यूशन आप लोगों ने केमिस्ट्री में बनाया होगा 10th 12th में, ठीक है, जहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सर बनाया जाता था, इफ यू रिमेम्बर. So here also aggregation means, here in this particular example employee class is there. So employee is the aggregation of these two different things. The first thing is employee itself. Employee itself means the basic details of the employees, and the second attribute is this address. ओके, सो यहाँ पे जो हैज अ रिलेशनशिप होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म ले लेता है. पर्टिकुलर फॉर्म क्या ले लेता है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप हम बना सकते हैं वो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप बना सकते हैं. ओके, एक ही रिलेशनशिप मतलब देयर इज वन एम्प्लॉय व्हिच इज हैविंग ओनली वन एड्रेस. जस्ट assume like there is no more than one address for an employee. This is an assumption here. Employee cannot have more than one address. Okay, so the relationship here is one employee is having one address, so we call it as one to one to one relationship, or one to one mapping basically. One to one mapping कहते हैं in case of our DB relationship for the entities. So these are two different entities, one is employee and one is address. So एक एम्प्लॉय का अगर हमको दिखाना हो कि एक ही एड्रेस हो सकता है, so we can do that with using the one to one mapping relationship. Understood? Okay, so one to one Yeah, relationship yes, sir. means one employee will have only one address. Okay, now this one to one mapping means only one relationship. One to one mapping basically comes under the aggregation part. Then what about composition? Composition का मतलब ये होता है कि composition means what? Composition is a mixture of more than two things, right? More than two, three, and n numbers basically. So composition का मतलब क्या होता है कि it's not only about one to one mapping, but it's about one to one. It's not about one to one mapping. It's about one to many, or many to one, or many to many. मतलब एक एम्प्लॉय का, let's say if I am having a different attribute, let's say private projects भी अगर मैं define करना चाहूँ ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज का, okay, so I'll need a separate entity here. Okay, एक separate entity चाहिए, so let me create that projects. Okay, so basically under the project I can have different property, like let's say private integer project id. ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, दो बेसिक चीजें तो होंगी होंगी कम से कम. Okay, project id, project name will be there. So here you can see, suppose in that company which is designing this employee management system, it is a norm there, like one employee can have many projects. So one employee can have what? One employee can have many projects. So it's not like one employee is mapped to only one project. It's like one employee is mapped to many project. So यहाँ पे जो association आता है वो क्या आता है? Composition आता है. So composition में basically क्या होता है कि there is more than one what? More than one entity. मोर देन वन एंटाइटी का मतलब क्या हुआ? एक तो एम्प्लॉय एंटाइटी है, जो इसका एसोसिएशन है प्रोजेक्ट के साथ, वो मोर देन वन होगा.
Understood? So basically it will be what, it will be the list of the project. So basically किसी किसी चीज को अगर हमको क्या करना है, more than one, basically if we have to represent a thing in more than one, more than one quantity, so how we do it in project, in the program? So we just make it a list out of it. So basically what here is, what is happening, employees having the list of projects. So here comes the role of one to many. One to many, one employee has the many projects, and here one employee was having just one address. So जब भी one to one की मैपिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पे एग्रीगेशन होगा. और जब भी वन टू मैनी या फिर मैनी टू मैनी या फिर मैनी टू वन, okay, there is other ways also. So everything you will study in the relationship of the tables. So those things comes under the composition. Okay, so basically all these all are the has a relationship. That's what you have to keep it in mind. And then from the aggregation point of view, it's just a one to one mapping. Okay, one to one relationship. Then for the composition parts, apart from one to one, what other relationships are possible, like one to many, many to many, or many to one. Okay, so these are the different types of compositions. Okay, इस चीज को इस चीज को दिखाने के लिए in terms of program, to do all these kind of things using the program, using the Java program, we will use something called the JPA interface. Okay, JPA interface का use करेंगे. ठीक है, उसमें बहुत सारे annotations हमको मिल जाते हैं. So all these things, like these things I am saying, like here, right, one to one, one to many. So we have the different kinds of annotation to represent this thing, to tell the Spring Boot, to tell the JPA, like what is the dependency of employees on the address, what kind of relationship they held. So उसके लिए हमारे पास कुछ annotations हैं. अभी वो आएगा नहीं यहाँ पे, because we don't have dependency for that. We need the JPA dependency. So we have like one to one. So this kind of annotations are there. Similarly here we can have the different annotation like one to many. Okay, so these things we will see in the coming sessions, but for now, for your understanding, you should be knowing what are different kinds of uh, associations available in the market, that means available in the programming world. Okay, so that is, again I am repeating, it's a one to one, one to many to many, and many to one. Okay, तीन चार तरह के होते हैं, एक बार जाके पढ़ लेना. Okay, real practical things we will do when we will start programming for this thing, we will start coding. Okay, apart from this एक और चीज डिस्कस करना है, since we have 10 minutes. Okay, so whenever you design a table, so suppose here is a employee अगर हम एक टेबल डिजाइन करते हैं, SQL table, let's say we are designing an SQL table, Oracle or MS SQL. So since you know the data are stored in the form of keys and rows and columns. Rows और columns के form में data को store किया जाता है. Okay, there would be one column. So let's say this is a column for name, this is a column for age, this is a column for salary, this is a column for, let's say, what other fields we have, name, age, salary, work experience. Okay, work experience. So these are different column. So होता क्या है कि in any of the tables, whatever you design, we are supposed to keep one column as a something called the unique column. यूनिक कॉलम हमको बनाना पड़ता है, यूनिक कॉलम बनाना पड़ता है. ऐसा क्यों बनाते हैं यूनिक कॉलम? why we make a unique column? Because see, in a real applications there will be lakhs crores of records, बहुत सारे records होंगे. Okay, so suppose if you want to try to figure out particular what we say, particular row from the table, let's say we want some data from, let's say, having the name as a Neeraj. मैं नीरज नाम का टेबल में खोजे जा रहा हूँ. Okay, and I don't have a unique column. So what will happen? Every time you will fire a query, means suppose you are just writing one query in the SQL, like let's say select a star from the employee table, or where the name equal to Neeraj. So what will happen? Basically it will keep on scanning every row, and suppose there are 1 lakhs of rows, so what will happen? It will take so much of time, and it's not good. Every time we have to make a how our application should work. It should be like fast, it should have the optimized performance, right? That's why we do something called indexing and all. That's a separate thing. You can understand, you can just study from your own, but for our purpose we should have something called a unique key.
ओके यूनिक की होना चाहिए, हर एक रो के लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिक की होना चाहिए, एंड दैट वी कैन गिव सम आईडी टू ईच ऑफ द रोज। ओके, सो उस आईडी से क्या होगा, बेसिकली स्कैनिंग हमारा आसान हो जाएगा। हाउ आसान हो जाएगा, दैट वी विल सी इन अदर सेशन। ओके, okay, so basically we give at a some id unique key, okay, and that unique key we will call it as a primary key, primary key। ठीक है, primary key क्या होता है, primary key is basically the unique key only in each of the rows, हर एक रो का जो unique key होता है। okay, primary key we can make it as a primary key। there is something called the composite key also, so composite key also, composite मतलब we can have more than one property, more than one column as a primary key। ओके, सपोज नाम है, एज है, सैलरी है, सो किसी दो या तीन या फिर n नंबर्स ऑफ कॉलम्स वी कैन मेक इट एज अ प्राइमरी की, and that we call as a composite key। okay, so for our purpose we will use two of the keys very frequently, just note this keys name। okay, इसके बारे में एक बार पढ़ना कि होता क्या है। okay, and these are small things only, nothing complicated, so I hope you will try to do it your own। okay, एक की का नाम है क्या, प्राइमरी की, एक की का नाम है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, ओके, प्राइमरी की, फॉरेन की, सो these two keys are very very important। okay, so whenever we will do the mapping relationship between more than two tables, more than one table I mean to say, so there will be something called a foreign key and there will be something called the primary key। so primary key is just for your on the higher level, I am telling you, primary key means the keys which belong to any and the tables। okay, किसी भी tables का वो column जो कि यूनिकनेस को दिखाता है, which represent the uniqueness of the row, that we call as a primary key। and foreign key is like if we have the two different tables, okay, two different tables है, एक employee है और एक उसका एड्रेस है। okay, so कैसे पता लगेगा कौन से एम्प्लॉय का कौन सा एड्रेस है। okay, so that's why we keep one column as a foreign key where each employee which is the primary key of the employee that will be the foreign key in the other table। okay, उसको मैं उसके साथ मैप कर देता, like employee has id like one। okay, so one employee id को मैं फॉरेन की बना दूंगा दूसरे वाले टेबल में, so that I can just have a reference, I can just have a reference of one table in the other table। so basically foreign key is used to it used to basically format give a relation between the two tables or n number of tables, कितने भी टेबल हो सकते हैं। okay, so उसका रेफरेंस को पॉइंट करता है बेसिकली फॉरेन की। okay, so that's about the today's session guys। the db part nothing to worry about, as soon as we will start doing the practice things and reading the concepts, you will understand automatically। if you understand the java concept, these things are very very easy, nothing complicated। the few terms are there which you should be aware about, and that I will keep on telling you whenever I feel like these things you should know। okay, so I'm just winding up today's session, and once again I'm telling you this thing, in our controller classes, whatever we had done so far, so here just create expect the request body। okay, right now I'm just hard coded everything, so don't hard code it, just expect everything from the request body and just do the things whatever we have tried doing it in today's session। so just go through the session once again, you can just listen to the recordings and all and try doing these things of your own। already I have shared that document, that the problem sheet whatever I was having। okay, again I'm sharing for the people who have joined late, so just try to do it your own, it will help you to practice the uh, beans of different beans of same type problems। okay, so that's it for today's session, I'm just winding up the session। okay, I'm stopping the recording।